So we were talking about the shear reinforcement of the column. That in our final, we have selected number 4 at the rate 7 center to center for 30 cross 30, and for 36 or 36 we have selected number 3 at the rate 4.5 inches center to center. Right. So now let us go to the minimum requirement of the code that we have fulfilled or not. It says that the ties shall consist of the closed loop deformed bars with spacing equivalent to A through B, right? So the first one is the clear spacing of at least 4/3 diameter of the aggregates. So if you know the aggregate size, so you can use this limitation as well. So normally we do not know the aggregate size, so let us leave this option and go towards the B. The first, the B is the center to center spacing shall not exceed. It is the minimum spacing, right? These are the maximum space. These are the minimum spacing of the ties. That they shall not exceed at least of 16 die of bar, 16 into die of bar, in which we have die of bar, we use number 6 bar. If you are concluding yourself as number 6 bar, so we will use dia is 0.75. So if you, and that will be equal to, if you use number 6 bar, so this is number 16 into 0.75. So the minimum spacing is 12 inches, right? This is the first criteria, 12 inches center to center. The second one is the 48 die of bar of tie bar, right? So we have multiplied to 48 into die of bar. So die of bar for the number 3, that is 0.375. That will be equal to 48 into 0.375. It is 18 inches. 18 inches center to center. And the last one is the smallest dimension of the member, right? So in our case, this is for the number 3, and for the number 4, it is 0.5. It's come out to be 48 divided by 0 and divided by 2. So it will give me 24 inches center to center. And the last one is the smallest dimension of the member. In case of the 36, it is 36 inches because both dimensions are the same. And for the in case of 30 is 30 inches. So you have to select the smallest value from these. So in all of these, we have the smallest value for 12 inches center to center, right? So now you have to compare this minimum spacing requirement with your provided requirement, required reinforcement. So we have provided number 3 at the rate 4.5 and number 4 at the rate 7 inches, which is less than 12 inches. So we have fulfilled this minimum reinforcement requirement for the columns, right? So this is how you check the minimum requirements of the shear ties or column ties according to ACI 31814, right? So there is final output of the column for 36, we have our 32 number 6 bars, and we will be using number 3 at the rate 4.5 inches center to center. For column 36, this is not an option. I have written it for the practice. So this is longitudinal bars is, we have selected 24 number 6, and the shear is number 4 at the rate 7 inches. So this is our final output of the column, right? So just like the minimum requirement of the ties, there is another limit of the ACI code on the maximum spacing of the reinforcement, right? We have to check whether we have provided reinforcement greater than maximum or not.
For this, there is a table that is 10.7.6.2.2. That is maximum spacing of shear reinforcement in case of the column. In this, there I have two columns, non-pre-stress and pre-stress column. So in our case, it is non-pre-stress column. And there is the shear capacity Vs, which is equal to this value. It should be greater than or equal to 4 under root FC prime PWD, or it is greater, right? So you have to compare this Vs with this value, right? So let us calculate this Vs for different columns. So I have calculated this 4 under square root. This is FC prime 6000 and this is 36. And D, if you minus 2.25 cover from the both side, from the top, that is using the stress block and all of these, you know, that if you minus the cover from it, it will give you this 34.75 right up to the center of the bars. So it's giving me 376 kip. For 30, it is giving me 201 kip, right? So now you have these values. So now you have to calculate the Vs value in your ETAB model and compare it with this, so you can select your limitation. Let us go to the ETAB. And let us select this. We have used this top, so we select the top. You go to the summary. And you will see that there is Vs value share, which is 30.2 kip, right? This is for 36 or 36 column, that it is 30.2. So we'll compare it with the calculated one, that in our case, the value is 376 kip. It means it is greater than this. Vs value is greater than 4 under root FC prime PWD. So in our case, the limit is lesser of D by 4 or 12 inches, right? This is the case for 36 or 36. And for the 30 cross 30, let us select that column, this one, go to the summary and check for the Vs. In here, the Vs is 35 again. So we have to compare with the calculated one from the table using the ECI table. So for 30 cross 30, its value is 204, which is greater than this value. So again, the second limit applies on our building, that you have to select the maximum spacing lesser of D by 4 or 12 inches, right? So for the both, we have the Vs 35 kip, which is greater than this value given by the, which is less than 376. We have to select the second option for our maximum spacing of the column. So it says that it should be lesser of D by 4. So D by 4. So D in our case is 34.75 by 4. And the next one is the D by 4 is equal to 27.75 divided by 4. Give me value of 34. Sorry, first वाला option use करेंगे. First option use करेंगे. Yes sir, क्योंकि ये value तो less than. This Vs 35. Yes, first one I use करेंगे. This is D by 2. I thought it's greater. So the first one, you have to use the first condition, because we have Vs value 34 and it is less than this value, right? So we have to go for this one, not this one. This is D by 4 on 24 inches. So this is D by 4. So make it D by 2. So this is a very good point. So
So you have to use this condition, not this one. So it comes out to be 34.75 divided by 2. It is 17 inches, and the next one is 27.75 divided by 2. So it's 13. So first one is 17 and 30. This is 17 inches center to center, and this is 13 inches. So these are the maximum values for the spacing that you should not exceed the spacing from these values. So we have provided in 4.5 or 7 inches. So we have not crossed the limitation of the maximum spacing of the ACI 31814. So this is the procedure how to check the minimum and maximum spacing of the ties in the RC columns. The next one is the design. I think this is enough for today. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It's enough. All right, so let us stop here and we will inshallah start from tomorrow the design of the beam. Right, so this was the whole story. If you have any questions, you can ask. अच्छा सर, ये मॉडलिंग में हम ये लॉक अनलॉक किस टाइम यूज करते हैं? ये जब आप किसी चीज को चेंज करना चाहे, फॉर एग्जांपल एक कॉलम के सेक्शन चेंज करना चाहते हैं या आप शेयर वॉल देना चाहते हैं, तो वी हैव टू अनलॉक द मॉडल. लॉक मॉडल में आप काम नहीं कर सकते. मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा लॉक मॉडल है. तो अगर मैं इसमें कोई चीज ड्रॉ करना चाहता हूँ तो आई एम नॉट एबल टू क्लिक ऑन इट. सो आप इसको अनलॉक करेंगे, फिर आप इसमें ड्रॉ या इसको डिफाइन वगैरह कर सकते हैं. मैं अगर डिफाइन में जाऊँ, डिफाइन में लोड पैटर्न में कोई चीज में डिफाइन नहीं कर सकता क्योंकि ये लॉक है. जी जी, इसमें ऐसी कोई चीज है जो आप ये आमतौर पे लॉक ही होता है. अच्छा, तो अगर लॉक है तो मैं डिफाइन पे चला गया और मैं कोई और सेक्शन डिफाइन करना चाहता हूँ, फ्रेम सेक्शन, तो आई एम नॉट एबल टू डिफाइन एनी सेक्शन. आप ये आप क्लिक नहीं कर सकते. आप किस तरह डिफाइन करेंगे? ठीक है सर. ठीक है, इसमें ऐसी कोई चीज है जो आप आपका सिस्टम अगर लॉक है तब भी आप उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगेन यू हैव टू रन द एनालिसिस. Okay, sir. Okay. ओके. जी, और कोई क्वेश्चन है? सर जो हमने ये स्टोरी ड्रिप और टॉर्जनल इरेगुलरिटी, इसके अलावा कुछ और चेक्स है जैसा कि सॉफ्ट स्टोरी है या हेवी जो इरेगुलरिटी चेक्स है वगैरह, इसके अलावा कुछ चेक्स है जो हमने करने हैं बिल्डिंग पे? इस कोर्स में तो हम नहीं करेंगे ना. अगर आप इंटरेस्टेड है, नॉर्मली वो आपके पास इस तरह कोई इशू नहीं आता. आप चेक कर सकते हैं. आप बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान रीड कर ले, इसमें सारे डिटेल गिवन है कि सॉफ्ट स्टोरी क्या चीज़ है आपके पास, वर्टिकल इरेगुलरिटी किस चीज़ को कहते हैं, उसमें किस तरह आप इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो आप कर सकते हैं. नॉर्मल जो डिजाइन प्रैक्टिस है, करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो डिजाइन प्रैक्टिस है डेली लाइफ, उसमें नहीं किया जाता क्योंकि उसमें बहुत कम ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें ये इरेगुलरिटीज आ सकते हैं. अगर आपके सर पास जो टाइम बेस है. शेयर है, जी जी सर, जो बेस शेयर है वो हम मैनुअली कैलकुलेट करें कि नहीं जाता, कि वो हम देखें कि टैब के साथ जो है ना वो मैचिंग करता है कि नहीं? आप कर लेना, आप इंटरेस्टेड है तो आप कर ले. बेस शेयर आप यहाँ से देख सकते हैं. आप यहाँ से डिस्प्ले में जाएंगे, शो टेबल पे जी क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जो के पास जो रिएक्शंस है, बेस रिएक्शंस, जी उस पे आप ओके कर ले. आप देख सकते हैं ये आपके पास जो अर्थक्वेक केस के अगेंस्ट आपके पास जो रिएक्शंस होगी. लेट्स मी क्लिक ऑन दिस ऑन अर्थक्वेक एक्स, राइट. सो ये आपके पास जो fx की वैल्यू नजर आए, दिस इज द बेस शेयर इन द डायरेक्शन ऑफ fx. सो ये आपके पास बेस शेयर है.
राइट, 3192 किप्स ये आपके पास बेस शेयर है। अगर आप कैलकुलेट करना चाहे तो आप मैन्युअली कर सकते हैं, लेकिन इतना डिफरेंस आपके पास नहीं होगा। द ओनली डिफरेंस विल बी, इसमें आपके पास कॉलम की वेट पे आ जाता है, बीम की बजाय आ जाती है, राइट। तो आप मैनुअली सबकी जो सेल्फ वेट है वो आप कैलकुलेट करेंगे, जो आपके पास SDL है, लाइव लोड है, सब लेके आप बेस शेयर फाइंड करेंगे। उसके बाद इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली इस 19-20 का फर्क होता है, तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है सर, जो हम करते हैं ये डिजाइनिंग, जो एक सेक्शन सेलेक्ट करते हैं, तो ये चेक्स के बात करनी चाहिए, या जो है ना हमने पहले जो है ना ये डिजाइन करके रिइंफोर्समेंट देख ले, फिर स्टोरी डेप और टार्जन इरेगुलरिटी हम चेक कर लें? आप ये पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। आप पहले जी टॉर्शन चेक्स वगैरह कर ले, लेकिन ये आप कंफर्म कर ले कि आप जो फॉर एग्जांपल अगर आपकी ड्रिफ्ट वगैरह पास हो रही है, चेक्स पास हो रहे हैं और आपने कॉलम्स की साइजेस चेंज कर दी, तो अगेन यू हैव टू चेक ऑल ऑफ दिस रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रिफ्ट एंड टॉर्शन रेगुलरिटी, राइट। सर, तो अगर आप मेरा जो है ना जी, जी जी सर, बताएं। सर अगर कॉलम सेक्शन है वो 36 का 36 या 30 का 30 है, अगर उसके ऊपर जो स्टोरी है मैंने 24 + 24 या 27 + 27, तो उसमें हम रिइंफोर्स चेंज करते हैं, मतलब कम कर सकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं, आप कर सकते हैं। अगर आप कॉलम साइज चेंज करें तो आप रेनफोर्समेंट को सेम भी रख सकते हैं, उसको कम भी कर सकते हैं, दोनों चीजें कर सकते हैं। जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ सर, जो मेरा सीनियर है वो कहते हैं कि रिइंफोर्समेंट कम नहीं करना, लेकिन बार का जो साइज से डाया है, मतलब नंबर 6 यूज किया, तो जो नेक्स्ट स्टोरी होगा उस पर जो है ना आपने नंबर 4 डाया वाला देना है बार। ये जरूरी नहीं है कि आप हर जगह ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा कि आप फॉर एग्जांपल नीचे से आपके पास 24 आ रहे हैं, ठीक है, और आपको ऊपर रिक्वायर्ड 24 नहीं है, आप 20 देंगे एज पर द साइज ऑफ द कॉलम, तो आप 24 के जी बजाय 20 दे सकते हैं। आप कॉलम साइज भी चेंज कर सकते हैं, आप नंबर ऑफ बार्स भी चेंज कर सकते हैं, आप उसकी जो डाया है वो भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं होगा कि अगर आपके पास नीचे से 20 आ रहे हैं तो आप ऊपर 20 लेकर जाएंगे। इसको आप 16 भी कर सकते हैं, नीचे आप इसको डावल्स दे रहे, हुक दे रहे, तो ये आपके पास ठीक ठाक काम करेगा। ठीक है सर। ठीक है जी। ठीक। सर ये इसके जो ओल्ड वर्जन में है टैब में, हम जिसमें जो है ना वो टार्जन रेगुलेटरी जो चेक करते हैं, वो हम बहुत आसान तरीके से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इसका जो टाइम पीरियड है सर, जो हमने वो देखा है अभी, जो आपने दिखाया है सर हमको, तो वो हम वही पुट करेंगे, या जो है ना वो हम पाल रिपोर्ट से भी जो है ना ले सकते हैं? इस रिपोर्ट से ले सकते हैं। जो फाइल में जाके समरी रिपोर्ट में देख के वहां पर भी हम टाइम पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं, या जो है ना वो हम टेबल से भी जो है ना वो मालूम कर सकते हैं कि इसका जो है ना एक्चुअल टाइम पीरियड क्या है। जो मॉडल में यूज होता है वो जो हम आपने सर अभी दिखाया है, तो वो तो ज्यादा होगा ना जो मोड शेप्स के लिए होगा, तो उसका एक्चुअल टाइम पीरियड हम कैसे लेंगे इससे? वो तो आप मैनुअली भी कैलकुलेट करेंगे ना, आपके पास जो टाइम पीरियड है, अप्रोक्सीमेट टाइम पीरियड, वो आपके पास मोड शेप को ही डिफाइन करता है, फर्स्ट मोड शेप के लिए। फार्मूला है CT H⁴ तो वो इसका टाइम पीरियड होगा कि नहीं? वो आप इसके साथ कंपेयर भी कर सकते हैं ना, नॉर्मली उसका 19-20 फर्क होगा, लेकिन जो आपको ईटेब दे रहा है वही आपको टीए से मिलेगा। ओके सर, और टाइम पीरियड पर जो है ना सर कोई रिस्ट्रिक्शन है कोर्ट के हवाले से कि इससे जो है ना कम होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए, जैसे कि फार्मूले रेनफोर्समेंट और शेयर रेनफोर्समेंट के लिए? नहीं इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह तो नहीं है, लेकिन कोड आपको अलाउ करता है कि अगर आप किसी बिल्डिंग में फॉर एग्जांपल आपके पास 2 स्टोरी 3 स्टोरी है, लेकिन उसकी टाइम पीरियड बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है जी, और आप उसकी लिमिट जी 2% है, लेकिन आप चाहते हैं कि उसकी लिमिट 2.5 हो जाए, तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो आप इससे कोई मास कम सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। आप 10% से जो मास सोर्स में से आप उसकी रिडक्शन कर सकते हैं, कोड आपको अलाउ करता है। तो अगर आप उसकी मास कम करेंगे तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, टाइम पीरियड कम हो जाएगा तो आपके पास लिमिट्स 2.2 से 2.5 हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो आप यू कैन डिजाइन इजीली। ओके सर, जो स्टोरी डेप है सर, जो हमने शेयर वाल यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं, अगर इसके बजाय अगर रेक्टेंगल सेक्शन हो, अगर हम उसको रोटेट करें तो फिर वो कंट्रोल कंट्रोल हो सकता है कि नहीं स्टोरी डेप? वो आप कर सकते हैं ना, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास रेक्टेंगुलर सेक्शन है, स्क्वायर सेक्शन है,
और आपके पास जी एक्स सर। डायरेक्शन में ड्रिफ्ट आ रही है, तो अगर आप इसको आर्किटेक्ट, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ क्या, आर्किटेक्ट आपको इश्यूज क्रिएट करेगा। आर्किटेक्ट आपको कह रहा है जी कि आप इस कॉलम को चेंज नहीं कर सकते, तो फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, लेकिन अगर आप आर्किटेक्ट आपको कुछ नहीं कहता, आप इसकी साइज फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में 48 रख ले, इस डायरेक्शन में 24 रख ले, तो इसके साथ भी आपकी ड्रिफ्ट कंट्रोल हो सकती है। लेकिन नॉर्मली आर्किटेक्ट से अलाउ नहीं करते। मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की वजह से कह रहा हूँ कि अगर आप जब डिज़ाइन सेल में काम करेंगे तो नॉर्मली आर्किटेक्ट आपको कहेंगे कि आप इसको स्क्वायर ही रखें, या इसी जो साइजेस है इसको आप ना छेड़े, बस इस पे आप डिज़ाइन करें। तो इस केस में आप डायरेक्ट ही शेयर वॉल्स की तरफ जाएंगे। जी ठीक है सर, थैंक यू सर। सर अगर कोई कॉलम जो है ना, अगर आर्किटेक्ट कहे कि ये जो है ना 18x18 से ज्यादा ना रखे, तो फिर अगर वो फेल हो रहा है तो इसका कोई सोल्यूशन है कि नहीं? तो उस पर आप फिर एफ सी प्राइम उस पर ज़्यादा करेंगे, लेकिन एफ सी प्राइम अगर आप फिर देंगे तो वो सारे कॉलम्स में देंगे। ठीक है, तो इसका हल आपके पास ये है कि इसमें आप ज़्यादा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर लें। लेकिन अगर आप फिर भी मुकम्मल फेल हो रहा है तो फिर आप कोई हल नहीं है उसका, आप जो कॉलम साइज है वो आप इंक्रीज करेंगे। इसके अलावा और कोई चीज़, आप उस आर्किटेक्ट को डराएंगे। बाज़ औक़ात आप उससे सख्ती से बात करेंगे कि मैं एफ सी प्राइम को बढ़ा रहा हूँ, इसकी वजह से ये कॉलम पास होगा, लेकिन इसकी वजह से मैं सारे कॉलम में एफ सी प्राइम बढ़ाऊंगा, तो आपका खर्चा बहुत बढ़ेगा। तो इस सारे कॉलम में एफ सी प्राइम बढ़ाने से बेहतर है कि आप इस कॉलम की साइज बढ़ा दें, एफ सी प्राइम बढ़ा दें, या इसके आप ज़्यादा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दें। या इसी तरह भी हो सकता है कि आप आर्किटेक्ट आपको कहे कि यहाँ पे आप इसके कॉरिडोर डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेकिन इस डायरेक्शन में कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं हो रही, तो आप इससे छोटा सा शेयर वॉल भी यहाँ पे प्रोवाइड करके इस कॉलम की कैपेसिटी बढ़ा के इसको पास कर सकते हैं। सर जिस जगह पर हमने शेरवाल देना है तो वहां पर हम कॉलम दे सकते हैं कि नहीं, मतलब कॉलम वहां पर से हम हटाए तो ठीक होगा, जैसा कि नहीं, हमने अभी वहां पर फिर आपके पास जी। कॉलम कॉलम तो आप हटा देंगे, लेकिन शेयर वॉल आपके पास फेल हो जाएगा। शेयर वॉल की इतनी एक्सेल कैपेसिटी नहीं है एज कम्पेयर टू द कॉलम। ठीक है सर। ठीक है, कॉलम को आप नहीं हटाएंगे। ओके थैंक यू सर। ओके ठीक है, थैंक यू सर। चलिए ठीक है, इज देयर एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क? So this was the whole story about the drift calculation, how you calculate the drift and how to find the solution for the drift. And then if the drift is not controlling, then you have to go for the dynamic analysis, that is time history analysis. And response spectrum analysis, if you are willing to, this is also called a pseudo dynamic analysis. And then there's a torsion irregularity, how you control that. If it's not controlling, that you have to go for the amplification factor. If it's still greater than 3, then we have to go for the dynamic analysis. And then we have done our column design, in which we use the values from the ACI code, that is maximum limit 1%, 8%. And then we have calculated the ties, and we check the minimum reinforcement spacing and the maximum reinforcement spacing on the column. We will be doing all of these checks on the column tomorrow, right? Right, sir. So this is the सर end of एक और this. क्वेश्चन है, जी पूछ ले। जो रिस्पांस स्पेक्ट्रम है वो हम कब करेंगे? ये एनालिसिस भी और रिस्पांस स्पेक्ट्रम का है, इस बिल्डिंग पर कर सकते हैं कि नहीं? देखिए, रिस्पांस स्पेक्ट्रम की तो मैंने आपको बताया, अगर आपके पास बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी आ रही है या ड्रिफ्ट कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आप रिस्पांस स्पेक्ट्रम करेंगे, राइट। लेकिन वो आपके पास बहुत कम रेयर केसेस होंगे। अगर आपने 100 बिल्डिंग डिजाइन की तो 100 में से एक बिल्डिंग ऐसी आएगी जिसके लिए आप रिस्पांस स्पेक्ट्रम करेंगे। लेकिन अगर आपके पास एक बिल्डिंग है जो स्टेप्स में है, जैसे हिली एरियाज में होती है, so let me explain it in English as well. So if there is a too much irregularity and drift issue in your structure, then you have to go for the response spectrum analysis or dynamic analysis, which is known as the time history analysis. For the response spectrum analysis specifically, it is used when you have systems in steps. For example, this is a building. This is in step 1, 2, and 3. So if this is the case, you have to go for the response spectrum analysis, right? So this is building 1, this is building 2. So these are the steps,
example, this is building 1, this is another one, and this is connecting to this, and it is connected to this. So these are the 3 buildings, this and this. These are in the steps. For example, this step is 30 feet, and this is another step, it is 50 feet. So if one building is connected in steps, so then you have to go for the response spectrum analysis. This is the basic need for the response spectrum analysis. You do not have to apply the response spectrum analysis on your regular structures. Another use of the response spectrum analysis, which is rarely used for the if you have exceeding the torsion irregularity limits and drift limits, then you have to go for the response spectrum analysis. But if you design 100 buildings, so 1 out of 100 you will face this issue and you have to go for the response spectrum analysis, right? And normally the designers do the time history analysis if the drift limits and the torsion irregularity limits are exceeding. Response spectrum analysis is also known as pseudodynamic analysis, which can also be used for this stepwise building, right? Is it clear? Okay sir, how about pushover analysis sir? हम इस building पर कर सकते हैं कि नहीं? Normally pushover analysis is done for the seismic evaluation of the existing buildings, not for the new buildings. तो एक जगह तो मैंने पढ़ा था कि वो नई बिल्डिंग पे भी कर सकते हैं. नई बिल्डिंग पे नहीं कर सकते, आपने जहाँ पे पढ़ा है गलत पढ़ा है. चलो ठीक है, थैंक यू. ठीक है सर. अब इसके अपने कोड्स है आपके पास जो there are different codes, specific codes for the seismic evaluation of the existing building in which you have to use this pushover analysis. Pushover analysis is not used for the design of the new buildings. New buildings. Although you can use P-delta effect for the design of new building, not pushover analysis. अगर हम P delta इसमें एक इंक्लूड करेंगे तो वो जो है ना, अगर इसमें P delta इफेक्ट आया तो वो हम लोड के हिसाब से करेंगे जो 1.2 डेड लोड प्लस 1.6 लाइव लोड. Normally code recommends you to use the seismic the service load combination for the P delta, but you can also use the load you can select the load combination from the defined load combination of your system. Okay, ठीक है, thank you sir. Right, so this is the end of this session and we will see each other inshallah tomorrow. Okay, sir. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Okay, sir. Thank you.